Dear friends, I am happy to present this training video to you. This training video captures the concepts of this handbook which we have developed to help you undertake advocacy at workplaces. It captures the concepts of advocacy and also presents some live examples from some of your network members who have been trained by us in workplace advocacy. This training video will illustrate the components that the handbook already has. After you've read the handbook, follow the video carefully and gain in confidence the next time you go for an advocacy session at a workplace. To begin with, what are the strengths of your advocacy? You present the human face of HIV. The more people meet you, the more are the chances of getting stakeholders out of denial. All this is possible because you are there to present your personal accounts of stigma and discrimination. You are there to dispel myths. You are there to differentiate between HIV and AIDS. And because you are leading a healthy and productive life, you are the best person to tell anyone that you too can work. So your advocacy can move people to act, whether alone or in groups. So how does one go about it? It's important to structure your story well. Start with introducing yourself clearly as a person living with HIV. Look at the audience and try making an eye contact. मेरा नाम शिबाना है और शिबाना पटेल है और मैं पिछले 11 साल से HIV के साथ जी रही हूँ और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रकाश सिंघोरिया है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5 वर्ष से HIV के साथ जी रहा हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं बेंगलुरु का रहने वाली हूँ। अभी HIV पॉजिटिव होके मैं 15 साल से जी रही हूँ। என்னோட பேர் செந்தில் குமார், நான் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து வரேன்। நான் கடந்த 9 வருடமா இந்த HIV யோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार दुबे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 16 साल से मैं HIV के साथ जी रहा हूँ। എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് HIV പോസിറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു। Once you've introduced yourself, delve a bit into your life before you were infected with HIV. मैं मैरिड था और उस समय हमारी एक बच्ची थी। उस समय हम एक स्कूल भी चला रहे थे। एज ए प्रिंसिपल आई वाज देयर। शादी का 3 साल बहुत हैप्पी मैरिज लाइफ चल रहा था और एक साधारण गृहिणी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी और बहुत लाइफ हस्बैंड का मेरा अच्छी तरह से चल रहा था। Now, share what you felt when you came to know of your HIV status, how life may have changed, or how you coped with it. एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम 5 महीने जिंदा रहोगे। It was very shocked to me. जब हमको पता चला तो मतलब हमारी कहते हैं कि पाँव के नीचे से कई हाथ जमीन खिसक चुकी थी। It's time now to state clearly but effectively any instance of stigma and discrimination you might have faced. An instance at a workplace should take precedence over any other instance. Give a first-person account and remember to speak from your heart. And check yourself from going into unnecessary details. இருந்த ஸ்டாஃப்லாம் வந்துட்டு என்னை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா ஆஸ் ஏ ஸ்டெனோகிராஃபர் நான் எல்லார்கிட்டையும் போய் நோட்ஸ் எடுக்கணும், அதை வந்து திருப்பி கொண்டு வந்து டைப் பண்ணி திருப்பி கொண்டு போய் கொடுக்கணும், அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா பார்க்கணும். எல்லார் மத்தியிலையும் நான் அவங்க அருகாமையில் பக்கத்துலேயே இருந்து வேலை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் எல்லாருமே பயந்தாங்க. இதெல்லாம் சரி இவங்க நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறாங்களே, என்னை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் வந்து வேலையை வேண்டான்னு எழுதி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். My husband was very sick and he was first tested HIV positive. I was a very good worker. I was working as a receptionist that time. I even had to show my employer my husband's HIV test reports, and I told him that my husband is very sick and I need leave. But my employer could not give me leave because there was no policy on HIV and AIDS. So I had to resign from the job. मुझे घर परिवार से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। माता पिता आते थे लेकिन घर का पानी नहीं पीते थे, न साथ खाते थे। दोस्त के घर जाकर रुकते थे।
डिलीवरी का टाइम पर मुझे एक बहुत प्रॉब्लम आया। डॉक्टर ने बोला, इतना गाली मुझे दिया, सभी जानने के बाद अब प्रेग्नेंट हुआ है पॉजिटिव, और बच्चे को ऑर्फन करने के लिए सोसाइटी में कोई दबा डालने के लिए क्यों ऐसी किया है। और शी इन द लास्ट मोमेंट शी रिफ्यूज टू डू द डिलीवरी। लोग हमसे नफरत करने लगे, दोस्त हमसे किनारे करने लगे, और यहाँ तक कि मेरा खुद का भाई कहा कि जिंदगी में अपनी शकल मत दिखा। I have faced discrimination from the medical fraternity where my delivery was concerned. Number 2 was from my landlord because he came to know about my HIV status. He told me to vacate the house. And number 3 from my own family members, that includes my brother-in-law and my sister-in-law who really loved me a lot, and she came to know that I was HIV positive, told me to leave the house. सडनली बच्चों का आना स्टॉप हो गया। बच्चों को वो लोग घर पर भेजते नहीं थे। अगर बच्चे थोड़ा भी आने के लिए कोशिश करें तो उनको बड़ी आंखें करके स्टॉप किया जाता था कि नहीं, आप चाचा चाची के पास नहीं जाना है, उनको टच नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। HIV പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഡോക്ടറിനോട് എൻ്റെ അവസ്ഥ തുറന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ HIV പോസിറ്റീവ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. With your account, you may now have touched many hearts in your audience. In most cases, the people you address may be interacting with a person living with HIV for the first time. Most of them may be unaware that you live a healthy and productive life. Now, share with them how you are living your life after HIV. 2002 இருந்து நான் வந்து ஏஆர்விங்கிற வாழ்நாளை நீடிக்கக்கூடிய மருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதன் மூலமா என்னால் வந்து நல்லா பணியாற்ற முடியுது. It was about 14 years after the infection. I was not on ART. So only last year I had to take antiretroviral drugs which prolongs the life of people living with HIV, and it's doing wonders. Many in your audience may have no idea that you are also a working person living with HIV. Tell them how important is work for you. रोजगार अगर नहीं रहेगा तो मैं जी कैसे पाऊंगा। HIV साथ में काम करने से नहीं फैलता है, लेकिन हाँ, अगर उसकी रोजगारी उससे छीन ली जाए तो आदमी HIV की बीमारी से पहले वो काम के बिना मर जाएगा। Because I could find work, I was able to survive. बहुत ज़रूरी है HIV पॉजिटिव पर्सन को अपनी देखभाल के साथ साथ उनके बच्चों की फैमिली की देखभाल के लिए भी उनका काम होना बहुत ज़रूरी है। We can work as anybody else. एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति हो के भी आज आप मुझे भी देखे कि मैं 8 से 9 घंटे तक आराम से काम कर रही हूँ और उसके बावजूद मेरा घर भी संभाल रही हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हमारे अन्य साथियों की तरह पूर्ण जवाबदारी से, पूर्ण सक्षमता से काम कर सकता हूँ। आज मैं घर के साथ साथ अपनी भी देखभाल कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। It's just not work, it's kind of a therapy. It's life. Advocacy has to go to places where your audience is. Use your strengths to drive home your point. Keep in mind your audience. They could vary from management to the trade unions, from employers' organizations to the government or media. Get your key messages across that HIV affects people primarily between 15 and 49 years. But worse, it affects the rights and welfare of workers. It can affect anybody and not just blue-collar workers. They must know that HIV is not the end of your life. You should emphasize that we pose no risk to our co-workers. HIV can't be spread through casual contact. Tell them we are living a productive life and can live for years. And if we have the support of the management, we can work like anybody else. HIV पॉजिटिव होने की वजह से मेरी कार्य क्षमता कम नहीं है तो आप मुझे काम से ना निकालें। HIV पॉजिटिव लोगों को ध्यान में रखते हुए वर्कप्लेस पॉलिसी HIV एड्स के ऊपर होना चाहिए। For instance, if you are addressing a trade union, highlight messages that relate to workers' rights and welfare. अगर ट्रेड यूनियन एक भी HIV पॉजिटिव का जीवन बदलता है तो वो HIV पॉजिटिव
जो वर्कर है वो भी हजारों का जीवन बदल सकता है। जिस प्रकार हमारे इंश्योरेंस कंपनी के श्रम संगठन ने मेरा साथ दिया, उस प्रकार उस कंपनी में भी यदि कोई पॉलिसी, कार्यस्थल की पॉलिसी नहीं है तो उसे विकसित करें और प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल करें। If you are in a government forum, you should be stressing on how to integrate HIV in their welfare schemes and programs. लेबर मिनिस्ट्रीज की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, वहाँ पर भी HIV पॉजिटिव लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। Integrate HIV AIDS into their programs as well as have friendly policies on workplace so that people living with HIV are not discriminated. Be with them all the way along for their fight, not only for their right to work but the right to live. Finally, end your whole narration with a message that shows your responsible behavior. मुझे पता है मुझे HIV है, तो मेरा ये अपने आप से कमिटमेंट है कि मेरा वायरस किसी और को ट्रांसफर ना हो और ये वायरस मुझ में ही मरते दम तक साथ में रहे। जब से मुझे पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मैं हमारी कंपनी में और अधिक मेहनत से काम करता हूँ ताकि कंपनी को यह मैं संदेश दे सकूँ कि HIV के साथ जीवित व्यक्ति भी उतनी लगन, मेहनत और सक्षमता से काम कर सकते हैं।